Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to study different or miscellaneous topics of data modeling. So today we will study multiple relationships, gerund or the associative entity classes, and limits on the cardinalities. So let's start. If we come across with multiple relationship, so far you have seen that there can exist only one relationship between two entity classes. For example, a student registers a course, but normally it is also possible that the same entity classes may have another relationship. So if the same entity classes have more than one relationship, then we call this multiple relationship. So the one relationship would be student joins or registers the course, and second one is student goes through the course, he completes the course, right? He gets the result. So these are two different relationships, so we have shown them as two relationships, and these are known as multiple relationship. So sometime more than one relationship exists between same entity classes. It is known as multiple relationship. So now let me explain it in Urdu. मल्टीपल रिलेशनशिप ये है कि अभी तक हमने देखा है कि दो एंटिटी क्लासेस के बीच में एक रिलेशनशिप हम शो करते थे, लेकिन कभी ऐसी ज़रूरत भी पड़ जाती है कि हमारे पास दो ही एंटिटी क्लासेस हों, स्टूडेंट और कोर्स ही हो, लेकिन उसके दरमियान में एक से ज़्यादा एसोसिएशंस आ जाएं, रिलेशनशिप आ जाएं. एक एसोसिएशन तो यह है कि स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है कोर्स, लेकिन अब ये जो उसका एक रिलेशनशिप है ये मुख्तलिफ है कि स्टूडेंट ने पास या फेल किया है कोर्स, वो गुजर चुका है इस कोर्स में से. सो हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको एक के बजाय टू डिफरेंट रिलेशनशिप से इसको हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. लिहाजा ऐसा कोई भी एसोसिएशन या रिलेशनशिप्स जो कि उन्हीं दोनों या तीनों एंटिटी क्लास के दरमियान में हो, लेकिन एक से ज़्यादा हो तो हम उसको मल्टीपल रिलेशनशिप कहते हैं. नाउ वी कैन चेक फॉर अनदर एग्जाम्पल दैट कस्टमर adds to favorite, I'm sorry for this typo, adds to favorite product. So he put some product in his favorite list, he just likes that thing, he did not buy that, right? But then another relationship can be customer buys the product. So these are two entirely different relationship. In the first relationship, customer is not buying, he is just putting that product in his favorite list. Okay, sometime later I will buy it. But at the other end, in this relationship, customer is buying. So in this way we show these two relationships between the same entity classes. So now in Urdu, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लेता है, वो उसको उसमें शामिल कर लेता है. फेवरेट की स्पेलिंग की गलती के लिए सॉरी, ये टाइपो है. तो एक काम वो ये कर सकता है, ये भी रिलेशनशिप है, और दूसरा ये है कि वही कस्टमर किसी प्रोडक्ट को ख़रीदता है. तो ये दो मुख्तलिफ रिलेशनशिप हैं. सो ऐसी सिचुएशन जिसमें एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बने, हम उसको मल्टीपल रिलेशनशिप्स कहते हैं. This is another example from your book. So here you can see that this is a unary simple single one relationship. Employee supervises employee, employee supervised by the employee. Okay, fine. But when we look at the employee and the department, here are two relationships. One is this one, employee works in a department, and another one is employee manages the department. So in fact these are two entirely different relationships. So this is the example of multiple relationship from your book, right? So in Urdu, ये देखिए जो एम्प्लॉई का ये एक रिलेशनशिप है, ये सिंगल है, यानी एम्प्लॉई सुपरवाइज करता है अपने दूसरे एम्प्लॉइज़ को, और एम्प्लॉई सुपरवाइज होता है किसी और से, तो ये तो एक ही है. लेकिन एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट के बीच में आपको दो रिलेशनशिप नज़र आते हैं. एक तो ये कि एम्प्लॉई वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट, वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और दूसरा अगर आप देखें तो एम्प्लॉई मैनेजेस द डिपार्टमेंट, वो किसी डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है. तो देखिए यहाँ पर इन दोनों एंटिटी क्लासेस के बीच में दो रिलेशनशिप्स हैं. सो दिस इज मल्टीपल रिलेशनशिप.
Now we'll talk about another concept, that is gerund or associative entity. Normally, one or more attribute do not belong to any of the related entity classes. What happens in fact, if we have two entity classes and those are related, then it is possible that some attribute may not be related to any of the entity classes. It is little strange. So far we have studied attribute is always for the entity class, but now I am saying no, if we have two entity classes related to each other, it is possible that an attribute or more attributes appear that may not belong to any of the entity classes. So this is the concept, that sometime one or more attributes do not belong to any of the related entity classes, rather those attributes appear only when the relationship holds. When the relationship occurs, when there is that relationship, then that attribute appears, right? We can see that attribute only when that relationship appears. So holds. So in this case, such attributes are attached with the relationship. So now we will not attach that attribute to the entity class, rather we will attach that attribute or attributes to the diamond or to the relationship. This phenomena is known as gerund or associative entity. So now check, here we have an entity class student, we have an entity class course. Student went through the course, he has gone through the course, he has appeared in the exam. So now the question is, where will his grades go? Into the student or into the course? So I just give you an example over here. For example, if this is the table, reg number, name and grade, student table, and if I add the grade over here in the student table, check, here we have student, so reg number, name, and I add the grade over here in the student table. So now here reg number, name and grade, but now one student can take many courses. So the same student 123 reg number, name Abdullah, may have grade A in subject 1 in any subject. Then the same student with reg number 123 Abdullah can secure B plus in another course. So that means in fact, as one student is taking more than one courses, so he may have more than one grade. But in fact, this is just giving us problem in the primary key. Primary key cannot have a duplicate value, so it is not possible. And similarly, due to this issue, we can see the redundancy over here. So in this case, grade will not be the member of student table or these attributes. So it is not possible. Second case, if we take the grade to the course table, in that case, one course can be taken by many students. So CS242 IDS would have some grade A for student Abdullah, for example. But the same course CS242 IDS may have a grade for some other student Amir. So now if we check this, we may find out that again we have this issue of primary key, and here we have the issue of the redundancy. So it is again not possible. So these two cases we cannot do that. So let's move back and now check. We cannot put the grade in the student table, we cannot put the grade in the course table. So we just associate or relate this with the diamond, that is the relationship. And as we have studied, attribute is always for the entity classes. So we design in such a manner that we draw a rectangle. Rectangle is for the entity class. So we draw a rectangle around the diamond and attach this attribute. So it gives us some concept that okay, this would be some entity class in the later stage maybe, and here would be the grade, that would be its attribute. So this kind of relationship is known as gerund, or it is also known as associative entity class, right? So it is associative entity class, that is associating these two entity classes, but it has its own, this relationship association has its own attribute. So now in fact it is behaving like an entity class. So now in Urdu, कभी ऐसा होता है कि हमारे पास
ایک ریلیشن شپ کے اندر کوئی ایسا ایک ایٹریبیوٹ آ جاتا ہے جو کہ نہ تو ایک اینٹی کلاس کا حصہ بن سکتا ہے نہ دوسری کا, دونوں کا وہ پارٹ نہیں بن رہا ہوتا, وہ ان کا ایٹریبیوٹ ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم ریلیشن شپ کے ساتھ اس ایٹریبیوٹ کو جوڑتے ہیں, کیونکہ وہ تبھی نظر آتا ہے جب وہ ریلیشن شپ ہولڈ کرے. یعنی اگر میں یہاں پر آپ کو مثال دوں, اسٹوڈنٹ وینٹ تھرو دا کورس, یعنی ایک اسٹوڈنٹ نے ایک کورس کو ختم کیا, مکمل کیا, اس کے امتحانات دیے, صرف اسی صورت میں اس کے گریڈز آئیں گے. اگر اس نے صرف رجسٹر کیا ہوتا تو اس کے گریڈز نہ آتے. تو جب یہ ریلیشن شپ نظر آنا شروع ہوا تو اس ریلیشن شپ کے ساتھ ایٹریبیوٹ کا سوال بھی پیدا ہوا. تو ہم اس ایٹریبیوٹ کو اس ریلیشن شپ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اینٹی کلاس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, کسی ریلیشن شپ کے نہیں ہوتے. تو ہم اس کے ارد گرد ایک ریکٹینگل بھی جوڑ دیتے ہیں, یہ امپریشن دینے کے لیے کہ یہ ایک ہے تو ڈائمنڈ یا ریلیشن شپ, لیکن کیونکہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے اور شاید بعد کی سٹیج میں یہ کبھی جا کے ایک ٹیبل یا ایک اینٹی کلاس کی طرح بیہیو کرے, تو ہم اس کے ارد گرد ریکٹینگل بنا دیتے ہیں اور ایٹریبیوٹ اس سے جوڑتے ہیں. اور اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں جیرنڈ, اور اس کو یا کہتے ہیں ایسوسیٹیو اینٹی. یہ اب ایسوسیٹیو اینٹی کلاس ہے تو یہ ایسوسیشن ریلیشن شپ, لیکن کیونکہ اس کا ایٹریبیوٹ آ گیا ہے لہٰذا یہ ایسوسیٹیو اینٹی ہے. اب اس کو ذرا مثال سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو سکتا. دیکھیے اگر اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ہوتا اور اس کا اپنا ایٹریبیوٹ تھا رج نمبر اور نیم, اور میں نے گریڈ بھی اگر اس میں رکھ دیا, آپ نے کثر اس کو اسٹوڈنٹ میں رکھ کر دیکھیں, تو دیکھیے ایک ہی اسٹوڈنٹ ہے 123 عبداللہ, وہ کسی ایک کورس میں اے لیتا ہے, وہی اسٹوڈنٹ 123 عبداللہ وہ کسی دوسرے کورس میں بی پلس لیتا ہے. ایشو یہ آ رہا ہے کہ پرائمری کی ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے, یہ نہیں ہو سکتی, پرائمری کی پراپرٹی ہے. پہلی غلطی یہ ہو گئی, اور اس رول کو وائلیٹ کیا گیا, تو ہمیں یہاں پر آپ دیکھیے یہ وائلیشن ہمیں لے کر آ گئی ہے ریڈنڈنسی, ڈپلیکیشن آف ڈیٹا پہ. تو لہٰذا یہ سولوشن تو پاسبل نہیں ہے. اب ہم نے کہا اسٹوڈنٹ میں اگر گریڈ نہیں رکھا جا سکتا تو اس کو آپ کورس والے ٹیبل میں رکھ لیں, جہاں پر اپنے ایٹریبیوٹ ہیں کورس کوڈ اینڈ کورس ٹائٹل, گریڈ کو وہاں لے جائیں. اب دیکھیے ایک کورس ہے CS-242 انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس سسٹم. اب 242 ایک لڑکا نہیں پڑھ رہا, کئی پڑھ رہے ہیں. اگر ہم گریڈ یہاں پر رکھ دیں تو 242 میں IDS میں ایک لڑکے کا گریڈ A آ رہا ہے, اور CS-242 IDS میں ایک اور اسٹوڈنٹ کا B آ رہا ہے. تو اگر اب آپ غور کریں تو یہاں پہ پھر پرائمری کی ڈپلیکیٹ ہونی شروع ہو گئی, جو کہ پھر رولز کی وائلیشن ہے, اور یہاں پر ہمیں ڈپلیکیشن مل رہی ہے. تو یہ سلوشن بھی موجود نہیں, اور یہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے گریڈ نہ تو اسٹوڈنٹ میں آئے گا اور نہ کورس میں آئے گا. تو اب اگر آپ اس کو غور سے دیکھیے تو یہ دیکھیں گریڈ اسی لیے یہاں پر ریلیشن شپ کے ساتھ فی الحال لگایا گیا ہے. جب ہم لاجیکل ڈیٹا ماڈل بناتے ہیں تو اس کو ایز اے کلاس شو کریں گے, لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ جان لیجئے کہ جیرنڈ کیا ہے. جب کسی بھی ریلیشن شپ کے ساتھ ہم کوئی ایک یا زیادہ ایٹریبیوٹ لگائیں, جوڑیں, تو اس کو ہم جیرنڈ کہتے ہیں, اور اس کے ریکٹینگل لگا دیتے ہیں, اس کو ایسوسیٹیو اینٹی کہتے ہیں, تاکہ فیلنگ یہ ملے کہ ایٹریبیوٹس ہیں تو لہٰذا یہ اینٹی کلاس ہے. تو یہ دیکھ لیجئے, یہ آپ کی ایگزامپل تھی. سو ناؤ دس از اندر ایگزامپل. کسٹمر بائز پروڈکٹ. So if he likes, he adds to the favorite list. There is no concept or no question of quantity and date of purchase. We cannot ask him. If he says, I like that product, I said, okay, fine, you have put that product in your favorite list. He said, yes. I will never ask him how many, when you purchased, because these questions will not arise. These questions will arise only when he tells me or when he buys the product. When he buys, we can ask him how many. Customer 1 bought, for example, the refrigerator A, so how many and on which date? So these attributes appear only when this relationship holds. So this must have a rectangle, and then it would become an associative entity. Now in Urdu, we have ہمارے پاس ہے ایک کسٹمر کی اینٹی کلاس اور ایک پروڈکٹ کی. دیکھیے کوانٹٹی یعنی مقدار, تعداد, اور ڈیٹ آف پرچیز اس وقت تک نہیں ان کا سوال پیدا ہوتا جب تک کسٹمر خریدتا نہیں ہے. اگر میں کہوں جناب کسٹمر کسی اسٹور کا ممبر تو بنا ہوا ہے اور وہ پروڈکٹس کو پسند بھی کر رہا ہے, وہ جا کے ان کو اپنی فیوریٹ لسٹ میں بھی ڈال رہا ہے, تو میرا یہ سوال کبھی بھی نہیں بنے گا آپ نے کب خریدا, کیونکہ اس نے خریدا تو ہے ہی نہیں. سو یہ ایٹریبیوٹ کوانٹٹی آف ڈیٹ آف پرچیز صرف تب نمودار ہوتے ہیں, تب اپیئر ہوتے ہیں جب یہ بائز کا ریلیشن شپ ہولڈ کرنا شروع کرتا ہے.
जब कस्टमर बाय करेगा, खरीदेगा कोई प्रोडक्ट, तो सवाल पैदा होगा कितनी खरीदी और कब खरीदी, किस डेट को। तो लिहाजा दिस इज अ जेरेंड, और अगर इसके इर्द गिर्द हम रेक्टेंगल भी लगा दें तो एसोसिएटिव एंटिटी बन जाएगा। और ये हमारे पास एक और मिसाल है। Now this is an example from the book with the convention that has no diamond. That is why I taught you people with the diamond, so that you must have some idea that where is that particular attribute going. But now here, as it does not use the diamond symbol, we will learn this in the end of this lecture. An entity class employee and the course, and the relationship completes, employee completes the course. So now when he completes, then arises the question of date of completion. When he completed. So in fact it cannot be put over here. Maybe he would have taken so many courses. So employee number 9 on 1st March. Employee number 9, the same employee, he did another certification, for example, 5th June. Then another, so it will not be the attribute of employee. It cannot be attribute of the course. Similarly, if course 1, for example marketing 1, and he takes A in it, then in the same course marketing 1, another student will be taking A or B plus, so it would not be the date completed over here. So sorry, date completed in 1st March, the other guy is doing on the 1st March as well, the 1st March, and the other guy is doing that certification on 5th of March or 5th of July, whatever. So in fact the date of completion, your date completed, would not be the attribute of course. So we just put it on that line, association. So this one is in fact the gerund or the associative entity. Now in Urdu, अगर हमारे पास दो एंटिटी क्लासेस हैं, एम्प्लॉय और कोर्स, और ये डायमंड के बगैर, और मैंने आपको इसलिए डायमंड के साथ पढ़ाया था ताकि आपको बहुत क्लियर समझ में आए और अब आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये लाइन ही रिलेशनशिप है, डायमंड समझ लें, यहाँ पर कहीं पर नहीं है लेकिन है। एक एम्प्लॉय कंप्लीट करता है कोर्स। अब जो कोर्स कंप्लीशन की तारीख है ना, वो ना तो एम्प्लॉय के साथ लग सकती है ना कोर्स के साथ। एम्प्लॉय के साथ क्यों नहीं, कि एक एम्प्लॉय कई कोर्सेज कर सकता है। तो 9 इमरान 5 मार्च, 9 इमरान 10 जुलाई। तो अब पता चलना शुरू हुआ कि यहाँ पर कोई इशू आ रहा है, प्राइमरी की फिर रिपीट हो रही है पिछली मिसाल की तरह। अगर यहाँ आ जाए कोर्स C1 मार्केटिंग 1 और 5 मार्च को ये वाला कोर्स कंप्लीट हुआ था, लेकिन अगर कोई और बंदा भी ये कोर्स कर रहा है, क्योंकि एक कोर्स कई लोग करते हैं, तो वही कोर्स C1 मार्केटिंग 1 और शायद वो 10 जून को हुआ हो। तो लिहाजा अब हमें समझ में आना शुरू हुआ कि डेट कंप्लीशन या डेट कंप्लीटेड जो है ना वो एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट है ना कोर्स का। तो हम जो लाइन होती है इस पे डॉटेड लाइन के साथ इसको जोड़ देते हैं। दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स कि दिस इज एन एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप, एंड नाउ दिस इज एसोसिएटिव एंटिटी और जेरेंड। इट विल बिकम एन एंटिटी क्लास लेटर ऑन, राइट। तो ये है जेरेंड की एक और मिसाल आपकी बुक से। यहाँ पे here we have another example with 3 entity classes. Some vendor or supplier supplies the parts to a warehouse, and now there can be an attribute that shipping mode, unit cost, these are 2 attributes. How he shipped that part on the maybe truck, maybe on some van, maybe with some courier service or something. So now this is the shipping mode, and unit cost of that part, right? So now the question will not arise if a vendor does not supply any part to any warehouse. It only appears when this relationship, just think here we have a diamond, then the question will be, okay, vendor supplied the part to the warehouse, so there would be some shipping mode and there would be some unit cost. So we related these 2 attributes in a box with a dotted line to this line, that is the relationship. So this is again gerund. Now in Urdu, ये हमारे पास टर्नरी रिलेशनशिप है जिसमें 3 एंटिटी क्लासेस वेंडर, पार्ट और वेयर हाउस हिस्सा ले रहे हैं। और जब भी कोई वेंडर कोई पार्ट सप्लाई करता है किसी वेयर हाउस को, सिर्फ तभी सवाल पैदा होता है कि उसने वो पुर्जा या वो पार्ट किस तरीके से भेजा, मोड क्या था, गाड़ी पे, ट्रक पे, किसी कोरियर सर्विस के थ्रू, और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी उस पुर्जे को भिजवाने की।
लेकिन अगर कोई वेंडर कोई पार्ट किसी वेयरहाउस को नहीं भेज रहा तो ये इसका सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। लिहाजा ये वो एट्रीब्यूट बने वो जब नज़र आएंगे जब सप्लाई होगी। तो जो सप्लाई का रिलेशनशिप है उसके साथ डॉटेड लाइन से हमने ये दो एट्रीब्यूट्स जोड़कर दिखा दिए। तो लिहाजा इसलिए मैं यहाँ पे डायमंड लगाया करता था ताकि हमें ज़्यादा क्लियर रहे, लेकिन ये नई कन्वेंशंस हैं, आपको आनी चाहिए। तो गौर कीजिए कि इसने दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर जोड़े, ये आपकी बुक की मिसाल है। So now the next concept is limits on the cardinalities. You would have seen the maximum cardinality, minimum cardinalities. So sometime we apply some limit on the cardinality to fix the value, right? So now we can check. Number A is fixed cardinality. If some limit is applied on a cardinality, then it is known as fixed cardinality. So fixed when we apply the limit. If we do not apply any limit on the cardinality, then it is known as open cardinality. So if I fix the number of records, it is fixed cardinality. If I do not fix it, then it is open cardinality. We can have an example. One student can take many courses maximum, but check here I have put a 6 over here. This 6 tells me student cannot take more than 6 courses. And one course can be offered only if there are minimum 15 students. So I fixed, by applying these limits, I fixed these cardinalities. Here I have fixed the maximum cardinality, here I have fixed the minimum cardinality. In this case again I have fixed the minimum, that is one teacher must teach at least 4 courses. So it is again fixed. But if I ask you, in a course how many students can get registered or how many students can study that course, you will say, sir, there is no limit on it. So I did not put any limit, so it is open cardinality, that is we did not write down any limit on it. Similarly, one course can be taught by many teachers, no limit, so again it is open cardinality. So this maximum 6 is fixed cardinality, minimum 15 is fixed cardinality, minimum 4 is fixed cardinality, and wherever we do not need to put any limit, then it is simply open cardinality. अब हम लिमिट्स ऑन कार्डिनैलिटी की बात उर्दू में कर लेते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि अपने सॉफ्टवेयर को बहुत बेहतर बनाने के लिए हम लोगों को लिमिट्स बनानी होती हैं, लिमिट्स बतानी होती हैं, ताकि जो भी हमारा डेटाबेस डिज़ाइनर और डेवलपर हो वो हमें रोक सके उस लिमिट से ज़्यादा रिकॉर्ड एंटर करने में। तो फिक्स कार्डिनैलिटी क्या है? अगर हम कोई लिमिट अप्लाई कर दें, एक स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा 6 कोर्सेज ले सकता है, तो एक स्टूडेंट के मैक्सिमम कोर्सेज हो गए 6। जब हमने 6 लिख दिया तो हमने अप्लाई कर दी है लिमिट, सो ये फिक्स कार्डिनैलिटी बन गई। और हमने जब ये कहा कि एक कोर्स कम से कम मिनिमम कितने लोग पढ़ेंगे तब वो ऑफर होगा, आपने कहा सर 15 लोगों तब कोर्स ऑफर होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने फिर एक लिमिट लगा दी, फिर ये फिक्स कार्डिनैलिटी बन गई। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा एक कोर्स कितने लोग, कितने बच्चे पढ़ सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, आपने कहा सर कोई लिमिट नहीं है, तो देखिए मैंने फिर क्या कहा, मैंने यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाई 50, 60, 70 की, तो ये ओपन कार्डिनैलिटी हो गई। ऑल्दो क्लासेस के रूल्स होते हैं कि एक क्लास की स्ट्रेंथ 40 से ऊपर ना हो, कहीं पर होता है 50 से ऊपर ना हो, ताकि टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन बेहतर होती चली जाए। तो देखिए वन कोर्स कैन बी टेकन बाय मैक्सिमम मैनी स्टूडेंट्स, और मैनी पे आप नोट कीजिए कोई लिमिट नहीं है, इट इज़ ओपन। एक कोर्स कई टीचर्स पढ़ा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, इट इज़ ओपन। लेकिन एक टीचर को मस्ट है, लाजिम है कि वो 4 कोर्सेज ज़रूर पढ़ाएगा, तो देखिए फिक्स्ड हो गया। एक स्टूडेंट के लिए लाजिम है कि वो 6 से ऊपर कोर्स नहीं लेगा, तो उसकी मैक्सिमम 6 है, 0 से 6 तक। एक कोर्स के लिए मिनिमम 15, तो देखिए ये फिक्स्ड हैं, ये ओपन है। सो ये कॉन्सेप्ट है लिमिट्स ऑन कार्डिनैलिटी का। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट्स में लगता है कि आपको कार्डिनैलिटी को फिक्स करना है, तो उसके ऊपर वो डिजिट लिखें और उसका रूल लिख दें नीचे अपने टेक्स्ट में कि ये इस वजह से हमने लिखा है कि यहाँ पर हमें लिमिट लगानी पड़ी। So the next concept is different representation of ERD. So far I taught you with the diamond and those symbols. So now I just want to show you that there is not much difference. That is, you always showed the attributes in oval or bubbles. But now here check. In fact, this is the modern technique or the modern symbols. So now we must learn these two. So this one is customer, the entity class name. These are its attributes. So instead of putting the attributes into some oval or the bubble, we just put them in this box like this.
then the other entity class product and its attributes, shop and its so like this. And now you will see these are the same, many and 0, 1. Sometime we only put 1, but I prefer it this single one means minimum 1 and maximum 1, so they put 1. But I always advise that you must put 1 and 1, so that we must be clear that you have not forgotten to put that maximum symbol. So just do that over here, just put one more bar, right? So it will be clear. So now these are the same symbols, but this one is different, that now you are putting the entity class and all the attributes in a box. Now in Urdu, अभी तक जो हमने देखा था तो मैंने आपको डायमंड के साथ, बबल्स के साथ बनाना सिखाया था ताकि आपको बेसिक सारी आ जाए. अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो आ चुकी है. तो अब हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम अब एंटिटी क्लास को सोचें. तो देखिए कस्टमर एंटिटी क्लास है. जो हम बबल्स बनाते थे, एट्रीब्यूट्स के 4 बबल्स बने होते, वो चारों एट्रीब्यूट इसके नीचे लिखती है. हर एंटिटी क्लास को ऐसे बनाया, डायमंड का सिंबल नहीं बनाया, और देखिए वही सिंबल हमने यूज़ किए जो हमने पढ़े थे अपने इस एक महीने में जो भी हमने डेटा मॉडलिंग की है. और ये देखिए यहाँ पर है एक प्रोडक्ट कम से कम एक कस्टमर ले रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ले रहा है फॉर एग्जांपल. तो इसने यहाँ पे जो 1 एक दफ़ा लगाया, इसका मीनिंग ये होता है कि दोनों को 1 ले रहा है. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इधर 2 दफ़ा 1 लगा दिया करें, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ना होने से कभी कभी होता है कि शायद आप लगाना भूल गए, तो डिज़ाइनर पूछता है. सो पुट 2 times दिस बार, सो इट विल गिव मी मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 1. आई विल बी मोर क्लियर, मैं ज़्यादा इसमें वाजे हो जाऊँगा. अब ज़रा एक और इसकी मिसाल देखते हैं. द सेम वन, द सेल सेल्स द बुक, द सेल सेल्स टू द कस्टमर, द सेल इज मेड एट सम ब्रांच. सो हमारे पास वही, सो नाउ वी हैव द सेम एंटिटी क्लास नेम, its attributes as entity class name and attributes, but now here you will find something different. Now it is not putting some bar on the relationship, rather it is writing down below the line or above the line 1.1. That means maximum 1 and the minimum. So simple. You have studied everything, but now you just must know that in fact these symbols are different, otherwise the same concept. And here when you see that one book is included minimum in 1 sale or can be in maximum many sales. So this static is many, for many. You used to have that crow feet, but now in this modern technique we are using here this static, and sometime you will find M for the many. So in these new techniques we are using the simple different symbols, right? So now for the many it is using static, or it can write down M for the many. And now in Urdu देखिए यहाँ पर अब वो क्रो फीट या 1 के या बार के बजाय अब वो लिखना शुरू हो गया है. एक सेल में कम से कम एक बुक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक बुक होगी, एक बुक कम से कम एक सेल में होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कई सेल्स में हो सकती है. तो नोट कीजिए अब यहाँ पे क्रो फीट के बजाय वो स्टैरिक यूज़ कर रहा है, जिसका मतलब होता है मैनी. तो आपको अगर ये भी नज़र आए तो आपको फ़ौरन समझ में आना चाहिए कि मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सिर्फ सिंबल फ़र्क है. तो कभी यहाँ पे स्टैरिक डाल देता है, कभी यहाँ पे 1 के साथ M लिख देता है. तो ये कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए कि थोड़ा सा वेरी कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे सारी जो समझ में आने वाली बात है वो वही है. तो अगर स्टैरिक है तो दैट मीन्स मिनिमम 1 मैक्सिमम मैनी. दिस इज अनदर एग्जाम्पल. नाउ हेयर इंस्टेड ऑफ static, sometime we use the infinity. So infinity is nothing, it is again equal to many. So we can use infinity, we can use static, we can use M, right? So now in this case we are using the infinity, so it is the same example. Now in Urdu अब आप ये देखिए कि वही सब कुछ है, लेकिन मैनी के लिए अब स्टैरिक के बजाय इन्फिनिटी का सिंबल यूज़ हो रहा है. जैसा मैंने बताया कि आपका जब भी मैक्सिमम में मैनी आएगा तो आपके पास हमेशा या तो वहाँ पे पहले आप क्रोफिट यूज़ करते थे, लेकिन अब या तो वहाँ पे M लिखा होगा, M फॉर मैनी, या फिर वहाँ पर स्टैरिक होगा, या फिर वहाँ पे इन्फिनिटी होगी. तो लिहाजा आपने इन सबको समझना है. इनके कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बिल्कुल वही जो आपने पढ़े हुए हैं. ये क्रोफिट ही है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के नए तरीके हैं. तो ये आपको सारे आने चाहिए ताकि जब इंटरव्यू में या किसी एग्ज़ाम में बैठें तो आपको कभी भी ये फील ना हो कि मुझे ये आता नहीं है. सो गो फॉर इट. इसको अपने जो क्लास प्रोजेक्ट है उसके अंदर अप्लाई कीजिए.
اپنی جو ERD ہے اس میں اس کو بنائیں اور اس کو سبمٹ کیجیے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ ملتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.